Ever since the protests over now withdrawn farm laws began on the borders of the national capital, opposition parties have been accusing the government of working against the interests of the farmers. Ladies and gentlemen, they've even rushed to Delhi borders to stand in solidarity and shed tears for these farmers. But away from the cameras, in Maharashtra's hinterlands, Times Now Navbharat exposes these Andolanjeevis, the term used by the Prime Minister to refer to those who use farmers and their cause as a poll prop. The case in point here is Jalna Cooperative Sugar Society, where farmers who donated their life savings, sweat and blood for the factory were gradually cornered out as politicians took over control of the entire cooperative sugar mill and its finances. Ladies and gentlemen, I want you to hear their stories tonight of how they were duped of their dues, their money, their land, and how the trail of their allegations leads right to the top political echelons in Maharashtra. Take a look at this exclusive report by Times Now Navbharat Special Investigation Team. अली बाबा बोले तो भी चलता है, क्योंकि वो तो 40 चोर थे, लेकिन इसमें तो हजारों चोर है हमारे महाराष्ट्र में, सहकार लूटने वाले। उसके ये शरद जी पवार और उनके भतीजे अजीत दादा इसके मास्टरमाइंड है। 15 एकड़ गन्ना लगाते थे जब फैक्ट्री चालू थी जब, और आज सब्जी खाली कोल्हू के लिए 1 एकड़ गन्ना लगाता हूँ सब्जी में। कितना फर्क आया आपकी कमाई में? आर्थिक स्थिति कितनी बुरी हुई फैक्ट्री? बहुत बुरी हाल है। सब्जी कारखाना बंद होने की वजह से मेरा जो मुख्य पीक था वो गन्ना ही था, और गन्ना बोना ही नहीं, हमारा आसपास कारखाना है नहीं सब्जी। ये बर्बादी के दिन कब से शुरू हुए फैक्ट्री के? क्या फैक्ट्री के बर्बादी के दिन जब शुरू हो गए, हमारे जो नेता थे बाला साहब पवार, वो साहब जी गुजर गए, और ये बाकी के जो सत्तारूढ़ बाकी के लोग जो आ गए, ये शिवसेना वगैरह, ये बाकी के पक्षी जो लोग आ गए, ये इन्होंने सब कारखाना खा लिया साहब जी। Manik Rao Jadhav, the man who blew the whistle on corruption in the Jalna sugar factory. Speaking to Times Network, he accused Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar of forgery. 98 में जो वो फैक्ट्री का जो इलेक्शन शुरू हुआ, तो वो इलेक्शन में अजीत पवार और शरद पवार ने मिलकर एक अपना खुद का पैनल खड़ा किया। As per the complaint made to Enforcement Directorate, Ajit Pawar allegedly had a role to play in the corruption that took place at Jalna Sugar Factory between 1997 and 98. According to the complainant, Pawar allegedly used his clout to appoint new board of directors at Jalna Factory. This allowed Congress leader Arvind Bajirao Chavan and Arjun Kotkar to control the factory. Arvind Bajirao Chavan was appointed chairman of the factory, and the Shiv Sena MLA Arjun Kotkar also joined as the board of directors. That is when it is claimed that the factory started making losses. जो राजकीय परिस्थिति निर्माण हुई, उसके बाद बाला साहब पवार खड़े रहे आमदार बोल के, उन्होंने गिर गए। गिर जाने के बाद वहाँ पे सेना का ये आ गया, और सेना बोल के दोनों जो सेना के और राष्ट्र ये कांग्रेस का एक आदमी था उसमें, वो दोनों ने मिलकर ये कारखाने को खत्म कर दिया। More loans were then sought from Maharashtra State Cooperative Bank to bail out the factory from losses. And that's where the bank's grip on the factory began to tighten. The debt on the factory increased several times during this period, and allegations were made that even the Maharashtra Cooperative Bank was allegedly under the control of Pawar family. लेकिन सवाल तो कोऑपरेटिव बैंक पे भी उठता है कि उसने इतनी महंगी संपत्ति वाले कारखाने को कम दाम में बेच दिया लोगों को, और डायरेक्ट और शेयर होल्डर्स को बताया भी नहीं। वो 8,500-9 हजार किसान जिन्होंने 2-2 हजार रुपए का कर्ज 1985 में लिया था, उनको तो कुछ बताया नहीं बताया। क्योंकि ये कोऑपरेटिव बैंक के पीछे दिमाग किसका चल रहा था? इसके पीछे राष्ट्रवादी के सर्वा शरद पवार और अजीत पवार
इनका सब एक खेल है। The leaders allegedly planned an auction in association with the bank to take over the Jalna factory, and the entire game was played through a regular proxy company. Maharashtra State Cooperative Bank fixed the bid at rupees 42.18 crore as per the market value of the factory on 9th November 2011. In 2012, on February 27, a tender was floated to auction the Jalna sugar factory. The auction process was attended by Tapadia Constructions Aurangabad, Ajit Seeds Limited Aurangabad and Molly Buildcon Private Limited Jalna. In the end, Tapadia Constructions won the bid for rupees 42 crore. But interestingly, according to the documents, 2 years later, Tapadia Constructions sold the Jalna sugar factory to Arjun Sugar Private Limited at a loss of rupees 15 crore. पैसा आया था पद्माकर मुळे की तरफ से, और जो ईडी ने जो थोड़ा कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है उसके अंदर ये साबित हो गया है पैसा पद्माकर मुळे ने दिया था और ये फैक्ट्री जिसको बेची थी, हालांकि उनके पास पैसा नहीं था. This is where the question arises as to why Tapadia Constructions entered into a loss-making deal with Arjun Sugar Private Limited. As per complainant, Arjun Sugar Private Limited was the company of Arjun Khotkar's brother Sanjay Khotkar, who was on the board of directors of the Jalna factory. It was set up on May 8, 2012 with the intention of buying the Jalna sugar factory. इसकी कीमत कम से कम 1000 करोड़ रुपया थी. तो वो फैक्ट्री 45 करोड़ में तपड़िया को बेच दी और वो पैसा भी तपड़िया कंस्ट्रक्शन से नहीं आया. So Arjun Sugar Industries allegedly was a proxy company of Ajit Seeds, and Arjun Sugar through Khotkar gave the money to Tapadia Constructions, and Tapadia Constructions bought Jalna's sugar factory at auction with the same money and then sold the factory to Arjun Sugar Private Limited. That is how Khotkar and the children became the owners of the factory. Now we take you to Aurangabad. Our correspondent Gaurav Srivastava also came to know that Ajit Seeds Private Limited, Tapadia Constructions and Arjun Sugar Private Limited had the same address. The office of Arjun Sugar Private Limited may not have a board in the building, but every courier of it used to come to this address. अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड का यही है. अच्छा नहीं, क्योंकि उस पर ऑनलाइन तो ये दिखा रहा था ना, ऑनलाइन जो देखिए ना तो दिखाता है. अच्छा यहाँ से कुरियर जाता है. इस वक्त हम ये तापड़िया टेरेस के बाहर मौजूद हैं और अगर आप देखें तो ये ऑफिसेज के जो एड्रेस हैं वो यहाँ पर मेंशन है. अगर आप देखें तो यहाँ पर तापड़िया टेरेस है और इसके बाद लाइन से अगर आप देखें तो तापड़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी जो एड्रेस इसी एड्रेस पे दिया हुआ है. इसके अलावा जिस दूसरी कंपनी का नाम आया है अजीत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि पद्माकर मूल्य से जुड़ी हुई है, उसका भी एड्रेस यहीं पर है. और तीसरा अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड जिसने आखिरी बार जालना की रामनगर की सहकारी शुगर मिल को खरीदा, उसके बारे में जब हमने यहाँ के एक एम्प्लॉय से पता किया तो उन्होंने हमारे खुफिया कैमरे पर यह बताया कि जो अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड के कोरियर हैं वो इसी अजीत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर से जाते हैं. और यही आरोप है कि प्रॉक्सी कंपनी बनाकर एक ही जैसे लोगों ने बिडिंग दी नीलामी के लिए. Ajit Pawar is accused to be the mastermind behind this corruption because Padmakar Mule is the NCP leader in Aurangabad. He is said to be NCP's fundraiser and a close aide of Ajit Pawar. However, when a team tried to contact the Padmakar children, it did not succeed. ईडी में भी जो कंप्लेंट गई थी अक्टूबर में तो उसमें उनका नाम था कई जगहों पर शिकायत में. तो हम स्टोरी कर रहे हैं तो क्योंकि हम स्टोरी ऑन एयर करेंगे तो मैंने लिखा है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हम रिएक्शन लेते हैं सबका जिसका नाम होता है, तो इसीलिए सवाल यही है कि जो शुगर मिल की लूट हुई इसमें जिन जिन लोगों को आरोप है उनकी जांच किस तरह से ईडी आगे बढ़ाती है. हालांकि इस मामले में तमाम आरोप के बाद जो है ईडी ने पिछले साल नवंबर में छापा भी डाला था, हालांकि उसमें बहुत बड़ी सफलता ईडी को नहीं मिली थी. वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र चौधरी के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, औरंगाबाद. Tonight, we ask this question. Of course, stand with farmers in New Delhi, in Uttar Pradesh, in Punjab, in all poll-bound states.
But what about the problems of 8,000 farmers in Maharashtra? What about these sugar mill scams? What about the cooperative movement, which was envisaged to be a game changer for the poor farmers? Why is it that the farmers have not got anything? Today they are landless laborers who've lost their money, their respect, and of course, above all, their own land which they gave to this cooperative movement. Who's going to think about that? Anna Hazare has written a letter to the Union Home and Cooperatives Minister, Mr. Amit Shah. Will the government take action? Will the government in Maharashtra wake up and look at these farmers and their problems? It's a question we'll keep reminding them day after day, week after week, month after month, to find out, do they really care about farmers?